Hello everyone, welcome back. Today I'm here with this 18th part of this questionnaire, and in this part I will discuss questions from bioinformatics, plant taxonomy, plant biotech, and plant embryology. Let's dive in. The question is, which alignment method is used to visually compare two sequences and detect regions of clone similarity between them? तो ये क्वेश्चन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से. इसमें हम डीएनए के सीक्वेंसेस और प्रोटीन के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड आवर ऑप्शंस आर ग्राफिक सिमिलैरिटी कंपैरिजंस, डॉट प्लॉट्स, स्कोरिंग मैट्रिसेस और पैम मैट्रिसेस. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ डॉट प्लॉट्स. इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं सीक्वेंसेस जो डीएनए के प्रोटीन के होते हैं, सिमिलर सीक्वेंसेस, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. And this is very traditional or intuitive way of comparing the sequences of a DNA protein. So bioinformatics में हम इस dot plot को use करते हैं. It is a graphical method that allows the comparison of two biological sequences and identify regions of close similarity between them. Mostly इसे हम use करते हैं compare करने के लिए two sequences को, either of DNA or protein, और oldest way है comparing करने की sequences को, as shown in the studies by Mazel and Lank in 1981. और ये graphical representation that I will discuss. इसमें हम position का पता करते हैं sequence के, एक sequence के, and is compared to every position of other sequence. And we use mostly dots or other symbols. जो आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ और सिंबल यूज़ करते हैं. एंड अलाउइंग विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी और आइडेंटिफाई बिटवीन द टू सीक्वेंसेस. सो इट इज़ वेरी यूजफुल वे टू कंपेयर सीक्वेंसेस, विजुअली आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी, एंड particularly effective when analyzing short sequences or comparing sequences with repetitive elements. Next we have the scoring matrices. ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं सिमिलरिटी को जानने के लिए अमीनो एसिड्स की. सो इट टेल्स हाउ सिमिलर अमीनो एसिड्स आर. और इसके दो मेन सेट्स होते हैं, दैट इज़ पैम एंड ब्लॉसम, PAM एंड ब्लॉसम. सो जो पैम होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस, while this blossom is based on structure, function and similarities. If we talk about the difference between PAM versus blossom, so this PAM is based on an explicit evolutionary model. Yeah. जबकि जो blossom है it is based on empirical frequencies. And this PAM is derived from small closely related proteins with approximately 50% of divergence, while जो blossom है it uses much larger, more diverse set of protein sequences, that is 30 to 90%. Higher PAM numbers to detect more remote sequence similarities, lower blossom number to detect more remote sequence similarities. Then errors in PAM is 1 are scaled 250x in PAM, 250. Errors in blossom arise from error in alignment. So these are some major differences between these two main sets of scoring matrices, that is PAM. The next question is, group of genes that include the most recent common ancestor of all its members and allow the descendants of that most recent common ancestors are called. Our options are tree, matrix, clades or GenLink. So its right answer is clades. So group of genes that include the most recent common ancestor of all its member and all the descendants of that most recent common ancestor is called clade. Mostly these are the fundamental units of phylogenetic classification and represents a group of organisms or gene that share a common evolutionary history. In a phylogenetic tree, जो clade होता है that represents as a branch that include the ancestor and all its descendant branches. तो ये include करता है एक phylogenetic tree में एक ancestor और उससे जो भी descendants arise हुए हैं उनको. And clade can be defined based on various levels of relatedness, ranging from broader groups, for example domain, kingdom, to more specific groups, for example we have genus or species. We have some terms related to this taxonomy, that is dendrogram, cladogram or phylogram. So what are the various differences between these? Dendron means tree. So जो tree की तरह ये
ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स डायग्राम बनते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डेंड्रोग्राम. सो डेंड्रोग्राम इज एनी टाइप ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ phylogenetic trees, and all 4 trees depicted here are dendrograms. So here we can see in this image, ये जो सभी structures हैं, सभी diagrams हैं, these all are dendrograms. Then next comes cladogram. So cladogram is a tree in which branched lengths do not represent evolutionary time. This one is cladogram, और इसमें जो branches हैं वो length represent नहीं करती है evolutionary time को. And the clades, जो clades होते हैं, they just represents a hypothesis about actual evolutionary history. ये just hypothetical होता है evolutionary history के बारे में. So here we have tree 1, this one, and tree 2. These are cladograms. Then the last one is phylogram. जो phylogram है ये एक tree है in which branch lengths represents evolutionary time. तो ये evolutionary time को represent करती हैं branch lengths. Clade represents true evolutionary history. यहाँ पे जो clades हैं वो represent करते हैं true evolutionary history, amount of character change. And we have example that is tree, जो ये tree 3 और tree 4 है, these both are phylograms. Next question is Cri-du-chat syndrome is caused by which of the following chromosomal aberration? Our options are deletion, duplication, inversion, or translocation. So its right answer is deletion. Cri-du-chat और cat cry syndrome होता है जब 5th chromosome की short arm delete होती है, that leads to this disorder that is called Cri-du-chat syndrome. So जो 5th chromosome है इसकी जो short arm है उसके deletion की वजह से ये सिंड्रोम होता है जिसे बोलते हैं Cri-du-chat syndrome और cat cry syndrome. इसमें जो चाइल्ड की वीपिंग की आवाज़ होती है दैट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ म्यूइंग ऑफ कैट. सो फ्रेंच में Cri-du-chat को बोलते हैं क्राई ऑफ अ कैट, और इट कम्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक हाई पिच्ड क्राई रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ कैट. Next background, so changes in chromosome structure and number that leads to chromosomal aberrations. We have this one that is called deletion. तो chromosome का part delete हो जाता है इसमें. Example is Cri-du-chat. The next is inversion. So यहाँ पे जो genetic material है वो flip हो जाता है opposite direction में, और इससे कोई भी oftenly disease होते नहीं है, rarely कोई disease होता है. Next is duplication. That is exact copy इसमें बनती है जेनेटिक मटेरियल की, और जिससे उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है. सो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ऐसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस में, और इसमें जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड चारकॉट-मैरी टूथ डिजीज़ टाइप 1. सो दिस इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन. नेक्स्ट इज़ ट्रांसलोकेशन. सो इसमें जो क्रोमोसोम का एक पीस है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है किसी दूसरे पोर्शन पे. सो पीस ऑफ वन क्रोमोसोम हैज़ ब्रोकन ऑफ एंड अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. So it is mostly the potential cause of trisomies. जो भी trisomic diseases होते हैं उसके लिए responsible है. Next comes common disorders, like we have this trisomy that leads to Down syndrome. It is trisomy of 21st chromosome, जो autosome है 21st, उसमें जब एक extra chromosome add हो जाता है that leads to this disease that is called Down syndrome. Next is trisomy of 18th chromosome. It results in the disease that is called Edwards syndrome. Trisomy of 13th chromosome, that is called Patau syndrome. Then Klinefelter syndrome. Here is one additional sex chromosome, that is X chromosome. Here the person is male but having female-like characteristic features. The next is Turner syndrome. Here there is one X chromosome that is missing. Here the offspring is female but have male-like characters. The next question is the formation of thymine dimers in DNA due to UV is repaired by which DNA polymerase in E. coli? So our options are DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3 or DNA polymerase 5. So mostly जो डाइमर बनता है यूवी रेडिएशंस की वजह से ई कोलाई और ह्यूमंस में भी ये म्यूटेशन देखी जाती है. सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वन it is initiated with one enzyme that is called endonuclease 5. वो इसे initiate करता है, but जो gaps create होते हैं they are filled by this enzyme that is called DNA polymerase 1. So this is called pyrimidine dimer. यहाँ पे जो thymine है जब UV radiations पड़ती हैं इसमें तो there is formation of this thymine dimer and it can be repaired by photo reactivation. इसको हम photo reactivation से भी repair करते हैं, और उसके लिए एक enzyme involved होता है that is called photolyase. फोटोलाइज एक्टिवेट होता है जब विजिबल लाइट पड़ती है उस पर,
देन इट बिकम्स एक्टिवेटेड और ये रिमूव करता है थायमिन डाइमर को. बट इन एक्सीजन रिपेयर में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है गैप फिलिंग में, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1. सो थायमिन डाइमर एक्सीजन रिपेयर इज इनिशिएटेड बाय E. coli एंडोन्यूक्लियस 5. तो ये एंजाइम इनिशिएट करता है इसको, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियोफेज T4, और ये स्लाइड्स करता है ऑन नॉन टारगेट सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेस विद इन साइज एट ऑल डाइमर्स विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल. सो ये स्टार्ट करता है रिपेयर मैकेनिज्म को. सो थायमिन डाइमर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द जीनोम ऑफ E. coli एंड ह्यूमंस, और इसमें जो इन E. coli कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज UVR ABC, and in humans the genes involved are, that is XP and XPG. So excision is genetically controlled by UVR genes in E. coli and XP genes in humans. The next endonuclease, that is endonuclease 5, वो cut करता है थायमिन डाइमर के पोर्शन को, and then this gap is filled with the help of DNA polymerase 1, और जो sequence बनते हैं that is joined by or ligated by DNA ligase. Then the common mechanism of this thymine dimer repair is one that is called photoreactivation, and second one is this excision repair. जो photoreactivation है इसमें repair करते हैं DNA को, and this damage, that is thymine dimer formation, is caused by UV radiation, that is UVC and UVB radiations, with the aid of photolase enzyme. एक enzyme है photolase, उसकी help से हम इससे इस mutation को remove कर सकते हैं. We can repair this by exposing this DNA in visible light. So the first evidence of photoreactivation was given by two scientists, namely Hauser and von Ohmeke. In 1933, Hauser and von Ohmeke reversed the darkened banana skin caused by UV exposure by using mercury arc lines at 366 and 405 and 435 nanometers wavelength of light. So process of photoreactivation or photoreaction is a light dependent repair. It uses photolase enzyme that activates by getting energy from the longer wavelengths visible light, जो कि 320 से 500 नैनोमीटर के रेंज में होती है. photoreactivation is a direct reversal of repair mechanism. So इसमें डायरेक्टली रिपेयर किया जाता है, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन जो हुई होती है उसको रिपेयर किया जाता है. while second method is the excision repair method, जिसमें इस थायमिन डाइमर वाले पोर्शन को रिमूव किया जाता है with the help of this endonuclease 5, and some genes are involved, that is called UVR genes in case of E. coli and XP genes in case of humans. So the exposure of visible light to the cyclobutane pyrimidine dimer reverses the effect of UV exposure. It mainly reverses the dimeric product of UV light into usual monomeric form. तो ये इसको रिपेयर करता है इस तरह से, and the enzyme involved in oxygen repair. This photoreactivation is photolite. Next question is, when anthers release their pollens before stigma of the same flower is receptive, is known as protogyny, protandry, hercogamy or chesmogamy. ये जो सभी methods हैं और ways हैं, these all ways are involved in ensuring cross pollination, or we can say avoid intra-flower pollination. तो ये सारी mechanisms उसी के लिए होते हैं, but the right answer is protandry. Here the condition is known as protandrous, और इसमें जो मेल पार्ट है that is anther, ये पहले mature होता है as compared to the stigmatic surface or stigma of that same flower, to avoid intra flower pollination or intra pollination. We can say within the same flower में pollination नहीं होता है, so this is called protandrous condition. Then second is protogyny. So we have two conditions, that is protogyny. Proto means early, gyny means female part. Here this female part becomes more receptive earlier as compared to the male part. So gynoecium matures before the androecium. इसमें gynoecium पहले mature होता है, while in protandrous condition जो androecium है male part है that matures before the gynoecium. और जो stigma होते हैं they are not receptive at the time of pollen release, तो इसलिए यहाँ पे cross pollination होता है. So this was the question asked. So pollens इसमें पहले ही release हो जाते हैं, और ये जो stigma है ये receptive नहीं होता, that is called protandry. Then next we have this hercogamy. It is again a method to avoid the cell pollination. Hercogamy is a spatial separation of anthers and stigma within the flower. इसमें spatially separate होते हैं
जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, here we can see it is this sarcogamy is different type, that is approach sarcogamy, reverse sarcogamy and sarcogamy, जो एब्सेंट होती है नॉर्मली, जिसमें जो एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं दे आर ऑफ सेम साइज और सेम लेंथ। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर ऑफ सिमिलर लेंथ, while in case of hercogamy they are spatially separated, means या तो जो फिलामेंट्स होते हैं एंथर के छोटे होंगे एज कम्पेयर टू दिस स्टाइल और स्टिग्मा, while in another case जो filaments होते हैं they are longer than the female part, we can say gynoecium shorter size का होता है और जो endoecium है they are longer size, so these are the methods to avoid self pollination. The next comes chasmogamy. We have two types of flower basically, one is chasmogamous flower, other is clistogamous flower. Clistos means होता है closed, सो ऐसे फ्लावर्स जो एक्सपोज नहीं हो करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और इसमें हमेशा होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाइल चैस्मोगेमस फ्लावर्स आर द एक्सपोज्ड फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं, एंड दिस टर्म चैस्मोगैमी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओपन मैरिज, इसका मतलब होता है ओपन मैरिज। So these are exposed flowers जिसमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के they are exposed, and here the chances of cross pollination is very high. This was all about for today's discussion about these questions. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.